Okay, just tell me, has anyone accessed his AWS account? Has anyone accessed his AWS account? Yeah, Joseph, just share your screen. Joseph, just download that one, CDP installation, and share your screen. Not upgradation, migration, these are later topics. We are just going to see installation today. Okay, installation theory, what components are there. हाँ, बिगनिंग से ही देखने वाले हैं. हिंदी में किसको चाहिए? मोहसिन अख्तर भाई. चलो ठीक है, हिंदी में बोलते हैं फिर. तो आज सीडीपी देखेंगे, पब्लिक डिप्लॉयमेंट. एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ. देखते हैं जितना ज्यादा हो सके उतना ले लेंगे आज, अपग्रेडेशन वगैरह हो सके. पर अपग्रेडेशन कौन सा देखना है तुम्हें? है उसमें कंपोनेंट्स का अपग्रेडेशन. हम आज कैसे, मतलब आज सिर्फ डिस्कस करेंगे कि CDH टू CDP पूरा एक साथ पॉसिबल नहीं होगा नितिन. तो इसका डॉक्यूमेंट, अच्छा ठीक है, तुमको अपग्रेडेशन देखना है ना, तो डॉक्यूमेंट वाइज देखते हैं. तो पूरा डिप्लॉयमेंट के साथ अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है आज एक ही इसमें. Hello guys, is my screen visible to all? Sorry for the delay, was facing issue with logins. Okay, तो स्टार्ट करते हैं. इंस्टॉलेशन 3 लाइन की कमांड है सिर्फ. तो किसी ने URL चेक किया काम कर रहा है या नहीं? ओके, तो फिर लॉन्च करते हैं सीधा. लेट्स बिगिन विद द इंस्टॉलेशन. अच्छा, पहले इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, फिर उसके थ्योरी वाली पार्ट कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं. C2. तो बहुत सारे वो लोग बोल रहे थे कि अपग्रेडेशन देखना है, तो अपग्रेडेशन CDH 6.2 से ऐसा एक दिन में पूरा टॉपिक एक साथ कवर नहीं होगा. तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे इसमें से कि एक सेकेंड, फ्रेश प्रीरिक्विजिट क्या है? मोहम्मद साहिल, उसका डॉक्यूमेंट दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. मेरे पास तीनों डॉक्यूमेंट है, डोंट वरी. डॉक्यूमेंट मिल जाएगा. अगर रिकॉर्डिंग में नहीं मिली तो आप पढ़ लेना, पूरा समझ जाएगा आपको. देयर आर नॉट मोर स्टेप्स इन्वॉल्व इन दैट. कर लेंगे हम कवर, डोंट वरी. अभी चलते हैं. डिफॉल्ट यूज कर चेंज करते आता है. कीपर चेंज कर. अबे ये बनाना.
until then मोहम्मद साइट प्रीरिक्विजिट की जरूरत है फॉर ट्रायल इंस्टॉलेशन एज पर तुम देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट में भी है प्रीरिक्विजिट का इंस्टॉलेशन तुमको दिखाऊं क्या CDP कैसे टाइप करते हैं तो देखो तो था प्राइवेट का पब्लिक का चाहिए क्लाउड प्रीरिक्विजिट तो CDP पब्लिक क्लाउड की आवाज नहीं आ रही ना तो ऐसा लग रहा है कि सब शांत बैठे हैं अबे AWS ऑन को देखो अबे ठीक है connecting cosmetic एक मिनट वाला लैपटॉप लेना तो उसके प्रीरिक्विजिट भी सेम है जैसे कर्नल ट्यूनिंग करते हैं ना एक सेकंड हाँ जैसे कर्नल ट्यूनिंग करते हैं ना वैसा ही है उसका भी प्रीरिक्विजिट के बिना कैसे आगे बढ़ोगे ये हो गया इनिशिएट तो यहाँ तक के तो स्टेप्स पता है ना कैसे EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने हैं वगैरह वगैरह तो आज हम करने वाले पब्लिक क्लाउड का इंस्टॉलेशन और तो पहले तो मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू हैज ट्राइड दिस लाइक पहले किसने किसने ट्राई किया है कितने लोग फेमिलियर हो इस चीज से ओके सिर्फ एक का है रिस्पॉन्स मुसिन राजा मोमिन अल्फिया ओके ओके तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है
ठीक है, तो जिन्हें नहीं ट्राई किया, कुछ ज्यादा नहीं है आज, डोंट वरी अबाउट दैट, फर्स्ट से हो जाएगा। Mute. Sorry guys, I was on mute. और I think it's already good. रूट नहीं लेने का सिंक्रोनस Let me just okay. ठीक है, टेक्स्ट कैसे बड़ा करते हैं? ये अतुल, ये स्क्रिप्ट वही है, बस ये इसका टेक्स्ट बड़ा नहीं हो रहा। Okay, is it visible now? I have sent it already. एक मिनट, फिर से सेंड करता हूँ। तो ये हो गया। ये हमने किया डाउनलोड आर्काइव से, तो हम ये यूआरएल पहले बता, एक मिनट, इस यूआरएल को कॉपी करने दो मुझे। देयर इज अ पॉइंट अबाउट दिस यूआरएल। अरे वो डाउनलोड, हाँ। तो गाइस, जिसको एक लोकल रिपोजिटरी होस्ट करनी है, ओके, तो व्हाट ही कैन डू इज, जिसको आपको यहाँ पे जाना है, इसके क्लाउडेरा बिन पार्सल भी जेनरिक के भी ऑप्शन है, तुम्हारे जार्स, जावा, पेरेंट डायरेक्टरीज, इसके हिसाब से तुम्हारे सीएम यूपीआई जैसे पार्सल्स और ये सब है ना, इसके बारे में पढ़ो। यू कैन होस्ट अ लोकल रेपो, अगर आपको चाहिए तो आप एक लोकल रेपो होस्ट कर सकते हो। और एक AWS अकाउंट पे 60 डेज तक का ही इसका ट्रायल रहता है। ओके, तो 60 डेज के ट्रायल तक आप एक मतलब इंस्टॉल करके जितना प्रैक्टिस करना है कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके, तो एक 60 डेज के ट्रायल के तक ही एक AWS अकाउंट में तुम प्रैक्टिस करना,
हाँ फ्री 60 days का ही रहता है इसमें. तो what you can do is like search about it. There is a document on this also, like for without internet how to install CDP. पूरे पार्सल्स पैकेजेस डाउनलोड कर लेना है तुमने तुम्हारे लोकल सिस्टम पर, एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ इंस्टॉलेशन ऑफ CDP. ओके. So for now we are installing it using installer bin. एक bin installer से हम CM UI जो कि इनका पब्लिक रेपो है उसमें से हम अपना क्लाउडेरा मैनेजर इंस्टॉल कर रहे हैं. ठीक है, with the version of 7.4.4. So we have downloaded it. Now chmod. Without internet means hosting a local repo on a machine. Mohammed. Okay. वर्जन है उसका CDP का. स्नेहा. विदाउट इंटरनेट का मतलब था कि तुम ये बताना था कि वेब सर्वर पे होस्ट करना है तुमने तो ये सब पैकेजेस, और फिर वहां से इंस्टॉल करना है. जैसे तुम इसका प्रैक्टिस करते हो ना, तुमने जैसे इमेज बना के रखी है इसकी, एक सेकेंड दिखाता हूँ मैं. जैसे आप यहाँ पे EMIs पे देखते हो, EMIs पे यहाँ पे ACM 6.2 और बाकी है ना ये 6.2, ये क्या है, इसके वेब सर्वर्स तुमने होस्ट करके रखे हैं. ठीक है, तो एक तुम अगर लोकल मशीन पे तुम्हारे एक मशीन सेंटोइस का लेकर उसके VM मशीन पे इंस्टॉल करते हो, तो उस तरीके से भी तुम कर सकते हो. आई एम जस्ट टेलिंग अ वे जिसको ये सब नहीं करना है. ओके. यस यस. काम करते हैं. हेलो, अभी आ रहा है साउंड क्लियर? ये वाले कमांड लेते हैं, इंस्टॉल और बिन. तो उसको परमिशन दे दिया कि sudo की कमांड. ये मैं स्क्रिप्ट से नहीं, क्लाउडेरा के डॉक्यूमेंट से ही कर रहा हूँ. ओके. नेक्स्ट, क्लाउडेरा डेटा सेंटर एडिशन. बाजू में, yes. Yes, accept the license. Now the installation has begun. तो स्क्रीन को बड़ा करते हैं.
Yes, Irfan, this is path B. In sense, we are using a trial version of CDP since we can't follow for path A. अच्छा वो ये path A का तुमने याद दिलाया. Let me share you for path A installation. Okay. यहाँ पे होगा document CDP AWS quick start. जो पाथ ए के स्टेप्स है ना, तुमको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे. ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है. तो पहले तो तुम्हारा होता है ये वाला कंसोल मैनेजमेंट. कंसोल मैनेजमेंट में एक सेकंड तुमको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा. ओके, तो अब हम आते हैं कंसोल मैनेजमेंट में. एडब्ल्यूएस अपना एडब्ल्यूएस क्विक स्टार्ट क्यों का है इसे बताइए कि अपना प्लेटफॉर्म एडब्ल्यूएस होगा. हम लोग एडब्ल्यूएस यूज कर रहे हैं फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ सीडीपी. तो हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप इसका कनेक्ट कैसे करेंगे एडब्ल्यूएस अकाउंट को, कैसे होगा, क्या होगा. ये जो पहली स्क्रीन आप देख रहे हो ना, ये कंसोल मैनेजमेंट और उसके जो सर्विसेज है जैसे डेटा हब क्लस्टर्स, डेटा फ्लो, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा वेयरहाउस, ऑपरेशनल डेटाबेस, मशीन लर्निंग. और उसके कंट्रोल पैनल में आते हैं तुम्हारा डेटा कैटलॉग, रेप्लिकेशन मैनेजर, वर्कलोड मैनेजर और मैनेजमेंट कंसोल पूरा. तो डेटा हब क्लस्टर्स में तुम्हारे होते हैं क्लस्टर्स, पूरे ETL के क्लस्टर्स, राइट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और उसके जितने भी रहते हैं जैसे स्पार्क ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हाइव क्वेरी हो गई, इम्पाला का हो गया, वैसे उसके पूरे तुमको क्लस्टर्स उसके अंदर मिलेंगे. ठीक है, डेटा फ्लो के अंदर डेटा फ्लो का जो भी है. डेटा इंजीनियरिंग के अंदर तुम्हारे मोस्टली कैसा होता है, एक सीडी तुमको वो एक इंजीनियरिंग क्लस्टर क्रिएट करके देना होता है. वहाँ पे मोस्टली तुम क्या करते हो, उसको मॉनिटर करते हो. मॉनिटर करने के बाद उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको ट्रबल शूट करना. जो भी इंजीनियरिंग के क्लस्टर्स है वो सब वहाँ पे तुम्हारे मिलेंगे. और डेटा वेयर हाउस में तुम्हारे ह्यू, यू हैव ह्यू, इम्पाला, बोथ क्वेरी आपको वहाँ पे रहते हैं. जो हम बोलते हैं ना कि फर्दर क्वेरी प्रोसेसिंग वहाँ पे, और ऑपरेशनल डेटाबेस इटसेल्फ, और मशीन लर्निंग एक अभी फिलहाल बूम में जिसपे डेवलपर्स बहुत काम कर रहे हैं. डेटा कैटलॉग तुम्हारे यहाँ इस बारे में रीड करो. रेप्लिकेशन मैनेजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्नैपशॉट्स एंड ऑल, वर्कलोड मैनेजर इज देयर, एंड लास्ट वाला मैनेजमेंट कंसोल. तो ये पूरे एक एक सेपरेट सीडीपी पे कैसे सेग्रीगेटेड क्लस्टर्स हो गए. तो जो डेटा हब क्लस्टर्स को मॉनिटर करना होता है, फिर उसको ट्रबल शूट करना होता है अकॉर्डिंगली. तो जो तुम्हारे डेली एक्टिविटीज जैसा आता है, राइट फ्रॉम क्लियरिंग ऑफ द लॉग्स टू मेंटेनिंग द क्लस्टर्स. तो ये एज एन आदोप एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ पे भी तुम हायर हो गए, ये जो प्लेटफॉर्म हैंडल करने के लिए और प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए. तो एनवायरमेंट अपने जैसे डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट्स लाइक इन डेव एज वेल एज इन प्रोड, व्हाट स्टेजिंग जो टेस्टिंग वगैरह होता है वो डेव में और इसमें ही होता है. तो रोज कैसे कोई पीओसी क्लस्टर्स के अपने को ट्रबल शूट करना पड़ता है, तो मोस्टली वो डेटा हब क्लस्टर्स में ही क्रिएट करते हैं. सपोज एक रिक्वायरमेंट आती है कि राइट वी हैव टू मेक अ स्पार्क, जैसे एक डेव स्पार्क इंजीनियरिंग नाम का क्लस्टर बन गया जिसमें सिर्फ तुमको डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है. तो उसके ऊपर एक पीओसी बनानी होती है. तो व्हाट कंपनी सेज दिस इज द रिक्वायरमेंट, यू हैव टू डिप्लॉय अ क्लस्टर इन डेटा हब क्लस्टर. तो उसके हिसाब से तुमको जैसे रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें दो सर्विसेज इसमें से यूज होगी, एक तुम्हारा डेटा क्लस्टर और एक डेटा इंजीनियरिंग. ओके, तो ये पूरा जो एनवायरनमेंट है ऊपर जो पूरा एंटरप्राइज क्लाउड का, तो इसके बारे में तुमको पूरा रीड करके निकालना है. पूरे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है क्लाउडेरा से. ओके, तो मैं फर्दर बताता हूँ कि इसमें स्टेप्स क्या बताए. देखो, टू कंप्लीट दिस क्विक स्टार्ट. हाँ, तो अच्छा ठीक है, फिर से आवाज कम हो गई ना. तो सीडीपी जैसे भी एडब्ल्यूएस की रिक्वायरमेंट क्या है, एडब्ल्यूएस से कितनी सर्विसेज एक क्लस्टर के लिए यूज होती है, सब कोई टेक्स्ट करके बताएगा मुझे. हाउ मच सर्विसेज यू आर यूजिंग. हाँ, एक मिल गया, ठीक है. S3 हो गया, VPC, EC2, S3, RDS, ओके, IAM, ओके. EMR नहीं, EMR पे EMR एक प्लेटफॉर्म, वो AWS का ही सर्विसेज ने. तो VPC है, S3 है, RDS है, EC2 है, IAM है, ओके. VPN एक एड ऑन हो गया उसके लिए, बाकी और कुछ नहीं गया. क्लाउड वॉच, क्लाउड फ्रंट, ओके, क्लाउड ट्रेल. तो ये सब कैसे होगा, जो अभी रिक्वायरमेंट जैसी आती है इसमें से पूरे क्लाउड के सर्विसेज नहीं होंगे यूज होंगे.
अभी जैसे अभी तुम डेव के लिए है, तो तुम अगर सपोज एक ही को मिला है वो, एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर हैड टू मेक अ पीओसी ऑन स्पार्क transformation. Okay, so will he use all these services? No, he will use only basic services like VPC, EC2 and S3. So this completely will depend on what use case. Okay, तो यहाँ पे है अपना क्या देखना है कि AWS की रिक्वायरमेंट एनवायरनमेंट में CDP अपन डिप्लॉय कर रहे हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट कंसोल, जब तुम क्लस्टर डिप्लॉय होगा ना तुम्हारा, तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट कंसोल पे शेयर्ड रिसोर्सेस नाम का एक उनको लेफ्ट कॉर्नर में दिख जाएगा। वहां से तुमने ये सब चेक करना है कि क्रिएट क्रॉस अकाउंट एक्सेस पॉलिसी टेस्ट। तो ये एक्चुअली पाथ ए फॉलो होता है। तो ये जो स्क्रिप्ट देख रहे हो ना यहाँ पे एरो का, क्लाउड फॉर्मेशन, ये तुम अटैच करते हो यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट करते हो। जैसे AWS कंसोल में आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में एक पॉलिसी क्रिएट किया, उस पॉलिसी को अटैच किया, फिर उस पॉलिसी को रिव्यू करके क्रिएट कर दिया। ओके, फिर वहां पे तुम उसको रोल्स वगैरह असाइन करोगे, आईडीज परमिशंस उसके अकॉर्डिंगली फॉर पर्टिकुलर रोल, फॉर डेवलपर हो गया, फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, फॉर जो अभी मॉनिटरिंग जैसे AWS के रिसोर्स भी मॉनिटर होते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। company what company regularly does like they tell कि just monitor the AWS resources, like resources means services like EC2, S3, what all, and for EC2 most of the time EC2 is being monitored because उसको attach होता है root volume हर बार, उसकी कैपेसिटी कितनी है क्या है, और उसको चेक करना होता है। Yes, through CloudWatch. It is shown going right. तो उसके क्रेडेंशियल्स वगैरह देकर यहाँ पे तुम्हें अटैच करना होता है। अब आता है पार्ट तुम्हारा मेन, रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टरिंग एन एनवायरनमेंट CDP एनवायरनमेंट टू योर AWS अकाउंट। तो एक फाइल होती है, उसके तरफ से डाउनलोड करनी पड़ती है अपने को, यहाँ पर मेन है। तो तुम एक AWS क्लाउड फॉर्मेशन के उसमें एक टेम्पलेट जो तुम्हारा रेडी है ऑलरेडी, वो तुम टेम्पलेट उसको अटैच करके उसको अपलोड करके रखते हो। then the same file which is in the JSON script and something, so you have to just choose that file and give it those parameters and click on the next, then you just उसके पैरामीटर्स में क्या क्या रहता है, तो वहाँ पे उसके बैकअप वगैरह, क्रॉस अकाउंट ARN लॉग्स वगैरह। तो ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, इसके अकॉर्डिंगली जाओ तो तुमको समझेगा पूरा। तो एक बार से नहीं समझेगा, एक दो बार रीड करना पूरा। ओके, तो फिर यहाँ से क्लाउड फॉर्मेशन, फिर तुम्हारा CDP जब एनवायरमेंट्स में, तो CDP के तुम्हारे सबसे पहले जो आता है, जब ये पहला वाला पेज तुम जब यहाँ पे एक मिनट, हाँ, जब यहाँ पे तुम डेटा क्लस्टर्स के अंदर जाते हो तो तुमको एक लेफ्ट कॉर्नर में दिख जाएगा, ये हो गया। ओके, इसको इंस्टॉलेशन वाज सक्सेसफुल। तो इसका हम पहले चेक करते हैं सिक्योरिटी को, इसका हो गया। को पहले डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर देंगे तो कंफ्यूज कहाँ थे, ये वाला रजिस्टर कर लिया हमने। हाँ, जब IAM रोल के हिसाब से तुमने एक स्टैक क्लियर कर लोगे किसमें, क्लाउड फॉर्मेशन में। क्लाउड फॉर्मेशन का पार्ट हो गया, फिर वहां से तुम्हारे कीज एक EC2 इंस्टेंस, अभी आता है पार्ट EC2 का। क्लाउड फॉर्मेशन का हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद एंड पॉइंट्स कनेक्शन के बाद में तुम्हारा, जब अब तुम बोलते हो कि EC2 इंस्टेंस ऐसे लॉन्च किया, अभी मैंने तो कुछ क्लाउड फॉर्मेशन के नहीं बताया, डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं कि सब बताते बेटा, इसलिए मैं तुमको ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, जस्ट रीड आउट ऑफ इट। तो ये जैसे जैसे क्रिएट होगा तुम्हारे की पहले से मैंने डाउनलोड किया है कि नहीं वाला सेम से वगैरह, फिर अपन आते CDP के मैनेजमेंट कंसोल पे। जैसे अभी ऊपर वाला जो मैनेजमेंट कंसोल है, मैं क्लिक करूंगा डेटा क्लस्टर्स पे, तो वहां पे तुमको लेफ्ट कॉर्नर पे दिख जाएगा एनवायरनमेंट। तो हम अब मेन पार्ट है कि CDP को रजिस्टर करना है AWS से। तो हम चूज करेंगे, जैसे जैसे स्टेप्स है वैसे फॉलो करेंगे, इसमें के पैरामीटर्स दे देंगे, जैसे उसका बैकअप का वगैरह
स्टोरेज लोकेशंस, एडमिन जैसे डेटा लेक का है, जैसे अगर तुम्हारी रेंजर्स की कुछ पॉलिसीज रहेगी तो वो एक अटैच करनी पड़ती है। फिर क्लिक करोगे नेक्स्ट, फिर यहाँ पे होता है क्लिक द टॉगल बटन टू एनेबल पब्लिक एंड पॉइंट एक्सेस गेटवे। ओके, यहाँ से जैसा है फिर उसके सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह वहीं से तुमको ऑप्शन मिलेगा। जस्ट गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट तो तुमको समझेगा कि एनवायरनमेंट कैसे रजिस्टर करना है AWS का। ओके, ये वाला पार्ट तो हो गया अपना, ठीक है। CD. तो यहाँ पर देखो पार्सल रेपो इंस्टॉलेशन CSD और CM अपने पास आ गया, ठीक है। तो ये चेक करना है पहले कि आया है या नहीं। ओके, नाउ फर्दर तुमको डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलना बता रहा हूँ मैं। अब आते हैं हम स्टेप 2 पर। अभी सर्वर होस्ट जैसे यहाँ पे बोला है लॉगिन टू द क्लाउडेरा मैनेजर एडमिन कंसोल, तो अपने को जैसा हम 7180 से फेमिलियर है तो उसी पे हम लॉगिन करते हैं। इसका IP लेते हैं पहले इंस्टेंस का, तो हम किस पे डिप्लॉय किया है। Wait. Most time career. चेक कर लो। Space. Start the same, yes. Security group. Before accessing UI, first check security group. Okay. डिफॉल्ट वन, तो 2 यहाँ पे ऐड करना है। पहले तुम्हारा My HTTPS। so बाहर का एक्सेस करना है HTTPS, दिख रहा है क्या? तो we have accessed CDP का लॉगिन पेज। तो एडमिन so as we don't have license, we will just go with the trial version. Continue. POC. So
इसमें 187 search for the entry, continue. ओके तो हमने कोई कस्टम रिपोजिटरी होस्ट नहीं की है. ओके तो जस्ट वी आर गोइंग विद द क्लाउडेरा वन. सब डिफॉल्ट पे चलता है. तो इंस्टॉल क्लाउडेरा प्रोवाइडेड. तो CentOS PM राइट. कहाँ पर होगी क्लाउड? क्लाउड एज L open. Now installation agent. तो फैजल सिद्दीकी. अरे अबाउट हो गया पूरा ये तो. परमिशन दिया तो नहीं। ऑल क्या एनीवेयर कर दिया यार. गंगाधर विजिट करना है बोले. भाई पीओसी चल रहा, बाद में वो सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट हो जाएगा. ट्राई विद पीएम के सेंटर्स लिया डिटेल्स. एक साथ कैसे रखना है यार? चैट बॉक्स को यहाँ tells me about installation. आ रहा है कमाल है. यूज करके
तो माइक, सॉरी माइक म्यूटेड था यार, इसको इधर एडजस्ट करते रहो एक साइड में। आपको 2 मिनट अभी तक तो शुरू हुआ है, तुम फैजल ब्रेक मांग रहे हो। फैजल ब्रेक मांग रहा है भाई। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। हाँ अनम्यूटेड है, अब अनम्यूटेड है, इसको साइड में डाल दिया। हाँ तो जब तक अपग्रेडेशन क्वेश्चन कुछ रहेंगे पूछो। हाँ कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछो तब तक। इंस्टॉल जेडीके ऑन रिमेनिंग मशीन्स टू इट्स इंस्टॉलिंग। तू पूछना क्वेश्चन। ओके इतना है तक तो, जिन्होंने नहीं किया था इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। लेट्स कंटिन्यू विद द फर्दर प्रोसेस। यहाँ पर फेल हो तो मजा आ जाए। हाँ तो आईपी बिलोंग, क्या मैसेज आ रहा है भाई? C2 internal already belongs to DB cluster ID. What? जी हमने प्रैक्टिस करके रखा है इस अकाउंट पे। Yes, yes, Aftab, you can use. अरे ऊपर से कोई अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो स्क्रिप्ट। तो हमने जेडीके क्लाउडेरा ऑप्शन सिलेक्ट किया था, क्लाउडेड बाय क्लाउडेरा, वही यूज किया है ओरेकल वन। तो रेस्ट इसके आगे के तो स्टेप्स सेम ही है, जैसे सीडीएच का सीएम तुम इंस्टॉल करते हो ना वैसे। यस बिलाल, कंपलसरी है। तो नहीं तो फिर तुमको वो उसका एरर आएगा, एक तो टाइम जोन का एनटीपी एंड क्लॉक ऑफसेट का एरर आ सकता है, नहीं तो तुम्हारे स्वैपिनेस का। राजा बोलता है वापिनेस का इशू आता। फायरवॉल कम्युनिकेशन, फायरवॉल डी का इशू आ सकता है तुम्हें। उनको हडूप का डेटा ठीक से स्टोर नहीं होगा, वो फ्रैगमेंटेड नहीं होगा। बताना पूरा ठीक से। Happiness. Which PPT? SQL JDK सब सेम रहेगा। SQL, हाँ तुम्हें ये बोलना था कि CDP, अरे ये मेन पार्ट रहेगा। तो टिल CDH अपने पास ऑप्शन था SQL का। ओके तो CDP में अपने को PostgreSQL का भी ऑप्शन है, SQL का भी ऑप्शन है। ओके
और प्रीरिक्विजिट पूरी सेम ही है, जैसे राइट फ्रॉम सॉपिनेस PHP जैसे ऊपर बोला है ना, सब पूरे रिक्विजिट प्रीरिक्विजिट सेम है। और JDK और Oracle JDK उसमें ऑप्शन है वो भी shown before। अरे मुझे सर, it was not PPT, it was document, this document, Cloudera document only। see, ऊपर मैं लिंक डाल देता हूँ ग्रुप में। चल रहा है या चला गया? We are directly deploying public cluster in CDP. For migration, let's see, wait, for migration, we'll just search for the document. What you are saying, CDP, CDH2, CDP, हमारे सामने सर्च करते हैं, लो आ गया। ये वैलिड है क्या? CDH5 नहीं, ये तो प्राइवेट वाला है। But how to perform a Cloudera CDH version 6 migration to CDP public cloud? ओ अरे ये तो ब्लॉक है, व्लॉग। अच्छा, इसमें माइनर अपग्रेड्स JDK का अपग्रेडेशन नहीं दिखाया गया है। तो अपने पास दो ऑप्शन होते हैं अपग्रेडेशन के, एक वाया CLI और दूसरा अपना UI से। तो UI वाले स्टेप्स बहुत सिंपल होते हैं। Migration and updations both are different, yes, but उसे yes भी बोले तो भी चलेगा, both we can say। ऐसा है, migrating from previous version to latest version is what upgradation, right? And updation is like जिसमें तुम्हारे minor updations भी होते हैं, जैसे JDK के हुए, थोड़े patch updations हो गए, तो both can be same बोल सकते हैं। In this migration from CDH to CDP, नहीं वो तो हो गया, तो हमने डिप्लॉय की। migration is yet to be done, I guess, yes, migration is yet to be done। तो माइग्रेशन की, अरे ये प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा है यार? अच्छा, स्नेल, कौन, which theory you want me to explain? After 60 days how can we deploy it? After 60 days दूसरा AWS अकाउंट ले लो और डिप्लॉय कर लो। अच्छा, थेराउटिकल यहाँ पे स्टेप्स पे आते हैं। तो जैसे अभी हमने होस्ट स्पेसिफाई करके हो गया था अपना, तो रिपोजिटरी में हमने सिलेक्ट किया था
जो पब्लिक रिपोजिटरी है, तो सिलेक्ट आइदर पब्लिक और कस्टम रिपोजिटरी बोल रहा है, तो हमने क्या सिलेक्ट किया था, पब्लिक क्लाउडेरा रिपोजिटरी। सो फिर हम प्रोसीड हुए थे आगे, तो हमने पार्सल्स जैसे अभी यहाँ पे सीएम सीडीएच या फिर सीएम जो भी है, यहाँ पे 7.1 का है, अपना 7.4.4 का है। ओके, तो यहाँ पे तुमने पार्सल सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्ट जेडीके, तो हमने जेडीके ऑप्शन सिलेक्ट किया था, इंस्टॉल क्लाउडेरा प्रोवाइडेड वर्जन ऑफ ओपन जेडीके। ओके, तो फिर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, तो रूट अनदर यूजर, तो हमने क्या लिया था, अनदर यूजर, जिसमें हमने सेंटोस लिखा था और उसको .pm की प्रोवाइड की थी। देन इंस्टॉलेशन एजेंट्स पे, जहाँ पे हमारे होस्ट फेल हुए थे, जहाँ पे अबाउट इंस्टॉलेशन आया था, देन विद इंस्टॉलेशन ब्लॉक्स एंड ट्रबल शूट, तो अकॉर्डिंगली हमने देखा, फिर इसको कंटिन्यू किया, देन द इंस्टॉलेशन ऑकर्ड, फिर पार्सल्स इंस्टॉल हुए, फिर अभी जो हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज टेकिंग क्वाइट अ लॉट टाइम, देखिए और कुछ बता भी नहीं रहा है। ओके, फिर से सिखाने लग गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है तुम्हारे मेन स्टेप्स, इंस्पेक्ट क्लस्टर। तो इंस्पेक्ट क्लस्टर के इसमें जो होता है ना, इंस्पेक्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस, तो ये तुम्हारे जब तुम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हो, तो तुम जो क्लस्टर का नेटवर्क परफॉर्मेंस इंस्पेक्ट कर सकते हो, दिस इज द ऑप्शन टू इंस्पेक्ट योर नेटवर्क, and but in this we are going to inspect just the hosts which we have used, from our AWS account. So we are, if after inspecting the host, as we get the green symbol, then we click on the continue for the further process. Then we'll get the option of further further is like Cloudera manager wizard will delete temporary and create cluster, then click continue, otherwise ये वाला लेना पड़ता है भैया। तो वहां पर तीन ऑप्शन होते हैं बेसिकली, quit the wizard, then and Cloudera manager will delete the temporary created cluster, then second option is I understand the risk, let me continue with the cluster in this only network performance। तो वहां पर हम करते हैं कि I understand the risk because the whole else part we are for in POC we don't configure, so I click the option of I understand the risk and let me continue with the cluster, then continue। तो फर्दर ऑप्शन होता है तुम्हारा क्लस्टर इंस्टॉलेशन का, जहाँ पे तुम डेटाबेस वगैरह क्रिएट करते हो वगैरह। तो उसके बाद ऑप्शन आता है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है इससे, समथिंग हैपेंड, ये है ना जनरेशंस। ऑलरेडी हो चुका है बोल रहा कैंसिल कंप्लीट। तो इसको टाइम लगेगा कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो इट्स नॉट प्रोसीडिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन। No, recently I have launched those NIS. So someone simultaneously can try these steps. Wait, let me just push this step.
न्यू मशीन ले और जल्दी से डिप्लॉय कर। Steps by example. No, it's not possible. ये 10 सर कुछ भी जब तक कुछ क्लिक करना है इसका। ये होना है, न्यू मशीन स्टेट को। टिल देन मैं पूरे स्टेप्स फिर से करता हूँ जस्ट वेट
प्रतीक आवाज क्यों नहीं गई? जो स्टेप्स पहले कर रहे हैं वही दोहरा रहे हैं। एक 20 मिनट में क्लस्टर डिप्लॉय हो जाएगा, फिर फ्री हो जाओगे तुम लोग। ओके रेंजर का आज कवर होगा तो लेंगे। ओके देखते हैं रेंजर का, एक्चुअली देखना पड़ेगा। और गिव अस ब्रेक। कौन है? आरिफ मलिक। इतने छोटे चीजों में ब्रेक लोगे ना तो वही होगा तुमसे। कंपनी में 8-10 घंटे कंटिन्यू करना होता है। तो ये कंप्लीट होने दो, कुछ नया नहीं है, सिर्फ अभी डिप्लॉय करके बता देते हैं, फिर ब्रेक ले लेना तुम लोग। आरिफ में से ब्रेक चाहिए किसी से। ओके जब तक ये इंस्टॉल होता है टिल देन कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। मोहसिन कुछ सुनाओ यार, सच्ची में कुछ सुनाओ, सब बोर हो गए। क्वेश्चन पूछना बेटा है तो पूछ। Okay, how many of you are on L2? L2 पे कौन कौन है फिलहाल? Okay. L3 पे कौन है? L2 क्लियर्ड है या L2 देने वाले हो? प्रोसेस। तो जिसका प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन बाकी है, दे कैन डिप्लॉय देयर प्रोजेक्ट ऑन सीडीपी एक्चुअली। बाकी के क्या चाहिए तुमको? अभी कुछ क्वेश्चंस तो आ ही नहीं रहे। चलो हो गया। ओके प्राइवेट आईपी पे छोटा टेक्स्ट बहुत छोटा हो गया सच में। टेक्स्ट छोटा हो गया। टेक्स्ट छोटा हो कंट्रोल प्लस गया, ये बड़ा हो गया। सब है। तो रेंजर के बारे में पूछ रहा हूँ। अगर सीडीपी और रेंजर सेम है तो ज्यादा फर्क नहीं है।
I sent off. पोल के इंस्टॉल कर इतने स्टेप्स हो गए पहले से। टाइप कर CLOU जेडी इंस्टॉल किया तूने किया क्या कंटेनर उधर बैठ जाते। हुसैन बोलता है चेंज कर माइक। देखा तेरी बड़े बड़े वहां तक जा रही है। अब अनम्यूट है। अनम्यूट है अनम्यूट वो भी सीख रहे हैं भाई, देख ही रहे हैं हुसैन इंस्टॉलेशन। अरे वो नेक्स्ट पर्सन है यूएस में। Tell us something about your project on which you are working on. Actually, currently I'm working on CDP only, but my current phase is monitoring. So I just wanted to share you about the environment of CDP. Okay. Actually, with deployment, I just wanted to introduce with the REST parameters of CDP.
like CDW, CDE. The most which is used are CD nowadays. That's why. Now it was direct. We have directly installed CDP Nishan. They have not migrated from CDH to CDP. I'm saying Darshan, like they have not migrated the platform. When I joined, no, it was CDP itself. Okay, so in that there are services like as I've shown you the document in which there were data clusters and all. Each of these services in CDP has like its specific own role. In data hub clusters there may be many clusters and all. The most used services are data clusters, CDE, CDW only, and rest of the parts are like machine learning and what else are there. I have to check it. Those can be segregated. I'm more interested to know third-party tools like data scientists are using Anaconda or Zeppelin or Tableau, and lots of supposed to there this type of tool in your environment. There is Zeppelin, but I don't know much about this Zeppelin. For most of the data scientists, for us, like it is Tableau only, that only. So they'll first create a stable CDP cluster and then perform migration from CDH. Uh, wait. So they'll first create CDP cluster and then perform migration from CDH. No, why they'll create a cluster for a CDP cluster first if they want to migrate? Like they can directly migrate from CDH to CDP, right? No. So if someone is joining a fresher like me, I have also joined as a fresher. So especially those who are in non-IT field. So like practice more, much and more, like what topics are has covered till now. No, just practice and just don't leave the track. The most of the topics, Linux is much more important. First of all, I would like to tell you, learn more Linux and Hadoop, Hadoop's topics like HA topics and Something also. Learn little questions. and security topics, practice those topics much. And for both Linux and Hadoop commands, you should know many more Hadoop and Linux commands. Okay. When data is arriving in your Hadoop cluster now, there are multiple users like Tableau, Anaconda Enterprise users, Storm, Stream kind of users. Still, there are multiple developers. They are using BI visualizer tools. Using those tools, they want to access your data from HDFS, not from you. You might few users, maybe few users, maybe interested to know third-party tools. You can get it from Shakir. You can read Cloudera documents. You'll get it from there. Third-party tools, apart from CDH, you can get. Okay. How you are managing these things? CM, CMUI from CMUI, you are we are managing. See, Path deployment has certain steps. Like after uploading JSON scripts, we deploy cluster using JSON scripts. Using JSON scripts, the steps I have told, these steps are being followed. I've shared those two documents in this chat also. You can go to those chats. You will get how the clusters are being deployed in CDP environment. Okay. Natch, you said now you are working on CDP and migration is not yet started. So what's going on in CDP?
Say for day-to-day activities like in CDP, we have to check, like we have to check for the error messages, not these error messages which are for configurations, like we get to increase this heap size and all. Until and unless it is not stopped, don't touch it. The first priority is that only. We regularly keep on checking for the health issues, like in Spark. There are some health issues, um, like one job. Currently, I'm not remembering any. There are always few file descriptor issues, and there are most of the health issues are due to logs. Those logs are being cleared on the regular basis, like one or two. Uh, the policy is like we have to clear the logs of uh, almost 2 days prior, means पहले 2 दिन पहले के या 3 दिन पहले के logs clear कर देते हैं in that. The letter related to the jobs, in the jobs, mostly developers in our environment, mostly developers fire those queries in view browser, and they only trigger the jobs in our CDP environment. So we have to confirm with the time elapsed with the user, who means the developer who has actually triggered the job, like what time elapsed, how much time this job is going to take. After confirming from that user, some of the developers don't know the data size and how much time it can take. So we have to keep it with the report in our environment, like this user is particularly not sure with the how much time the job is going to take. Some of the jobs may take 3 to 4 days, so we have to ping the user on the regular basis. So like, what is this the expected time elapse or not? So if not, then by confirming from the user and the team, we have to kill that job. And there are some issues with the job, like some jobs can take longer periods of time. So it can be any, like network connectivity, size of the data, and the syntax and syntactical errors of the query fired by the developers. So all these parameters are taken into considerations, and then we begin with the further process, whether to either to kill the job or let it run. जैसे टाइम मिलेगा ले लेंगे CDH to CDP. एक्चुअली आई थिंक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तो रुको चेक करता हूँ मैं, तब तक आप वो रीड कर लेना. I'll send it. I'll share with your volunteers, and they'll share with you. Okay. So nodes in dev environment, Shakir, like nodes can be for testing. The nodes are less numbers, like 3, like what we are doing in this POC. No, that much only the nodes can be. For prod clusters, we are having above 100 nodes. Actually, I can't really don't remember, but for one cluster, I'm telling that having more than 100 nodes of cluster, including BDR. Okay. We don't know retention periods are decided by the architects. Sahil. So CDP is in staging, non-production yet. Both are there, staging. I want to say that dev and prod, both. You are basically preparing CDP for production ready. Yes. Your all environment are characterized. We are using CDP, obviously it is characterized. And there is one more like token generation. I think that service name is token generation. So these services are recently being added to our CDP. Just search about it, token generation. I have to get it about that service. The concept behind that is like, suppose a user is being uh, triggering a job, the joke, yes, token generation. So I think in the background, it is validated with the tokens of how much time elapse or time.
it can take with along with that what we can say authentication with that token generation. That service is related to that only, validation and authentication. Okay. Yes. पार्सल डिस्ट्रीब्यूट होने बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं. No, Yusuf, only CDP is there. They are moving on Kubernetes itself. Depends. The sir SDX use करना it's depends. Shared data experience it is. So yes, walk me through number of services that you are using right now in your cluster. Hussein, I think very few services are there that we have not used in our cluster. There are almost, including Atlas and all, there are all like services. Kudo and all we are not using. Okay, ask any further questions till distribution of parcels. So our environment is, let me give you an overview of environment. So our environment is basically, as you know, we are using AWS cloud and CDP, and in that we are having three of the environment this what we call dev, staging, and prod. So basically the monitoring, what I do is the monitoring of the overall these three. So any of the issue comes, we have to take a meeting on that and troubleshoot the health issues accordingly. Because I only report health issues to the team, and for that they provide with the remediation steps towards the health issue, and I have to go through it. Like I said, no, whether it is related to the jobs, Spark jobs or queries, or some UIs being not opening due to network connectivity issue, and those we have to report on a daily basis. And log clearing is there, and in between some other tasks also get involved from our management. Those that also we have to trigger. Sachin, you can search this difference between parcel and packages. Packages are, it's simple like any other questions? Yes, Ganesh, there is BDR cluster. We have to keep that BDR cluster for every of them. Yeah, Sahil, just now I said my day-to-day activities. That is only my day-to-day activities. I may be confused between CDH and CDP. You said your environment is CDP in prod. Where do you do monitoring? And also you said CDH migration to CDP is not yet done. See, when I joined the company, I was directly handed over to CDP environment. Okay, that's why I'm telling you that I have not faced any migration till now. And uh, for monitoring, we are using CM only. Okay. Cloud Data Manager is used for monitoring in our environment. In your environment, which type of authentication mechanism is one way or two way? See, the security part is handled by senior most, so I have to look at it. So as far I know, there is one way, I think. One way only. So distribution is being completed.
Yes. So this is what I was telling you here. Network inspection. See, see, network inspection and host inspections. You can read further here only. Yes, Shakir, it is encrypted, but the as far I know, the encryption part is handled by the client. So for POC, we have to, for POC only we are taking this. Okay, I understand the risk of not running the inspection or detection issue. Let me continue with the cluster steps. Client side encryption, not every each of the encryption is handled by the client only. Means our project client. So we will use your custom services. Both encryption is handled by our client, project client, I said. Yes, this part, this is a good question asked by Champa. Like for most of the CDP clusters, we are using by default. CDP is using capacity scheduler for by default. Okay, so for in performance tuning, we are using default capacity scheduler. Okay, not this any means modification is done to the performance tuning of the Hive, Spark, and rest of the services. We are only using default. Okay, so if the priority comes with the some, so accordingly we have to accordingly the seniors will look at it. Like some jobs they keep on modification, but as for now I have not seen any modification, but it depends totally on the use case. Okay, so whether to keep capacity scheduler or whether to keep fair scheduler. So most of the time capacity scheduler is used, but talking about rest of the performance tunings of Hive, Spark, and else, you have that depends on the use case. Okay, but the steps remains the same as the as in the documentation provided by the Cloudera. Okay, so let's Hadoop. Let's select Hadoop. You. We are deploying core. Yeah. Zookeeper. Okay. What are the services in core Hadoop? Like Zookeeper is done, Yarn is done. Can someone text? Yes, Yusuf. Text me core Hadoop services. HDFS is done. Tanvir, dynamic resource pooling, you can get it in documentation itself. That is what you have to search about it. Like these are the basic questions. Okay. HDFS is done. Okay. And HDFS is done. Hive is done. You have taken. Uzi has been done.
Spark. Let it be. Let's see afterwards. Let's continue. Okay, we are only having 3 nodes. So we all know about service distribution, right? In case of G2, the HTTP admin creates workflow coordinator scripts to automate the jobs. Sometimes yes, and totally depends. Like sometimes they'll tell you to create the automation for Uzi workflow, and you have to create it. How you are distributing also tell. After you can read deploy like a boss. It's like I'm using only 3 hosts, so I don't have much to explain. If I was using fully distributed, then I would have explained you with the conceptual. But you want to go with the conceptual uh, after vision. Yes, yes, IDS is not required. We are just simply doing a POC, just to know the environment of CDP, like how CDP is being is there and what are there. Like if you get the job on, if you get selected to the company, like you will be able to tell something about CDP, right? If they ask you like what is CDP and all, have you gone through it? Or so just practice something about CDP and tell something that they will be good at it. No, they we are not using any Ansible. It will depend on the company, like they are using or not. But in an environment, we are not using Ansible.
So till then just study this one, Cloudera cluster. This one, yes. See these snippets are there, and we just started. Let me check. After just starting, I'll tell you where are they. It is already there. We are using EKS, and one POC is also going on Kubernetes. But when it will, as soon it will get successful, then we'll get to know about it further. But Kubernetes is like next step. See, this one I'm talking about. So this script which we upload in the while we create a new cluster, right? See, there it is set cluster name. We have to provide the cluster name here, where host name and the template, what is the role and all. So study this, okay? These services for one time. Whenever you are using path A deployment in company, like they'll tell you to deploy one POC cluster in just less than a time. So you have to you should be able to at least understand what is there in the script. So this is the script which you use for the deployment of the cluster, in which there are like service and where the location and all is there. Okay, just study this JSON script. It will be more useful for you people to understand. So there are steps to import also. साहिल इतना नहीं सीखना पड़ेगा, सिर्फ समझना चाहिए एटलीस्ट क्या है उसमें, पूरा JSON सीखने की कोई जरूरत नहीं है. तो मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये देखो इस बारे में भी एक कॉन्सेप्ट है. ओके, मॉनिटरिंग एंड डायग्नोस्टिक. तो डायग्नोस्टिक्स में इंफॉर्मेशन होती है, आई थिंक इसका डॉक्यूमेंट है मेरे पास. हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है, देखो. तो मॉनिटर का मॉनिटरिंग के भी मतलब, जैसे हमारी टीम है, हर क्लस्टर का मॉनिटरिंग की मतलब एक टीम होती है और वो रोटेशनल में होती है. तो यार कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द क्लस्टर्स, उसका एक टाइम इलैप्स होता है, 1 घंटे में मॉनिटर करना है या आधे घंटे में मॉनिटर करना है. तो उसको उस टाइम के हिसाब से मॉनिटर करना होता है. जैसे अभी CDE मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग है और एनवायरमेंट भी है. तो उसमें वी हैव टू मॉनिटर हेल्थ इश्यूज. ओके, so some health issues are like of S1 priorities, like suddenly data node fail, or master node, worker node, any of the data node fail. अगर वो S1 priority पे जाता है तो diagnostic bundle, this is the concept in which the information about the all the host, this chart, like service role, host, instance switch, and the reason whole log is there, which is very helpful for the troubleshooting. Okay, read about this also, monitoring and diagnostics. हेल्थ इश्यूज वही, जैसे अभी मैंने बताया ना कि, एक मिनट इसमें है कि कुछ देखते हैं तो मैं तुमको बताता हूँ. जैसे डेटा नोट
फेल हो गया उसका एक आता है। जैसे कभी कभी देखो HA करने के टाइम पे अपना जूबी पर एक हेल्थ इशू में चला जाता है कैनरी सर्विस डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, तो वी हैव टू रिपोर्ट दैट एंड दोस ओनली से डेली इश्यूज जो आते हैं ना, जैसे फाइल डिस्क्रिप्टर एक हेल्थ इशू है यू का, कनेक्टिविटी का, और बाकी 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 होता है। डन। कैनरी फातिमा वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व होती है थोड़ी देर के बाद, उसका हमने को सिर्फ टाइम लैप्स देना होता है कि इट गॉट रिजॉल्व और नॉट। कैनरी इज अ सर्विस व्हिच Jupyter deploys. Okay, here we are getting, see this is what I'm talking about. Bad health, it is giving us the uh, issue of bad health. See this we have to report, like what is this all about. So resource manager health, so एक्चुअली हेल्थ इश्यूज यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जितने हेल्थ इश्यूज है, जैसे देखो यहाँ पे कैसे बताया, नेम नोड हेल्थ, रिसोर्स मैनेजर हेल्थ, क्लॉक ऑफसेट। सो यहाँ पे कुछ प्री रिक्विजिट्स के जो एरर्स है ये, तो दिस वी हैव टू ट्रबल शूट ऑन अ रेगुलर बेसिस। So these issues may occur on a regular basis or may not, but we have to troubleshoot it accordingly. Okay. तो मैं अभी कुछ ये नहीं करता हूँ, ट्रबल शूट नहीं करता हूँ, बट एक साथ नहीं दे रहा है। Resource manager, active resource manager role. I think this item improves the health of it just as instances. Capacities के लिए और कपिल भी वो एक्सप्लेन करना।
टाइम जोन एनटीपी कॉन्फ़िगर। सो यहाँ पे इशू ये है कि इसका एनटीपी शायद कॉन्फ़िगर नहीं था, तो अपने को क्लॉक ऑफसेट का एरर थ्रो कर रहा है। ओके, तो तीनों भी होस्ट का आई थिंक टाइम जोन डिफरेंट हो गया। तो ये एक पार्ट था यहाँ पे। मुझे बताना ये था कि एक्चुअली यान में रिसोर्स मैनेजर थ्रू कैसे तुम जॉब ये करोगे। We have already deployed it all. activity on. Okay, let's see. Close. Disconnect. Come on. चलो
It's not taking tab. Yes, sir. Start with it. Up arrow. Wait, troubleshooting.
तीनों भी इंस्टेंसेस पे एनटीपी एनटीपी स्टार्ट कर रहे हैं बस ऋषिकेश क्लाउड एज थर्ड मशीन थर्ड होस्ट का प्रॉब्लम checking the status okay basically what we have done is just started the ntp and check the status okay now we are starting the cluster again so इसलिए ध्यान से कभी भी करो तो प्रीरिक्विजिट एकदम ध्यान से करना नहीं तो ऐसे इश्यूज आते रहते हैं तो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ स्क्रिप्ट फायर कर दी और हो गया तो चेक करो कि पूरी प्रीरिक्विजिट ठीक से हुई है या नहीं
utility note, worker note. Just not- Oh, space. Actually, guys, there are this node, whichever this node is, they are having it is having firewalls. That's why the issue is being there. So basically, 34.7 full and it is in critical. That's why for RAM it has used 7. That not might be the issue, but data node has become. The NTP due to NTP for space remote. Yes, heartbeat not sent. Exactly, Shakir. It's okay. I have to troubleshoot it. But have you understood the deployment of CDP? And if you need anything further, just inform to your volunteer, and I'll be helpful. But for next time, I'll deploy this CDP with proper so that you will be able to understand. There are two main topics which we have left for today is CDE and CDW, which were important, but due to this issue, we are unable to proceed with that. Okay, guys. Let's see. Let's connect for the next time, and I'll explain you how to create CDE and CDW. Not yesterday, tomorrow. Sir बोलता है next time means yesterday. Okay, we'll connect tomorrow if I'm available. So I'll tell you the further steps of this. So okay, events and logs. Service name and all. Okay. Okay, guys. Thank you for today. I'll look at it and I'll provide you with rest of the things. There are some documents. I'll share that documents with you people and let you know. Okay. Thank you.